Hello, everyone. Good evening and welcome to this analysis session of CUET Undergraduate Entrance Exam 2023. We'll be talking about day 6, which was today, 26th of May 2023. And we have got feedback from all the three shifts, multiple papers. We'll look at each one of them. So we'll first start with the shift 1, which was about English and accountancy paper today. So while I have covered in great detail in the first impression morning today about the English and the accountancy, I'll just do a quick recap once again. So what happened in the English paper today? Was it any different from the previous 5 days? Not exactly. We had a similar structure today as well. So there were three passages for the English paper. So three reading comprehension passages, and each were followed by 5 questions as expected. One of the passages was actually a poem, which was on racial discrimination. So focus remained on grammar and vocabulary. In fact, rather more on the vocabulary side. In fact, since synonym, antonym together had close to 5-6 questions today. Fill in the blanks. There were a couple of questions, para jumbles, around 4 questions there. Idioms and phrases, more of the phrases were there actually, like she jumped the boat as soon as she got the chance. So it's very easy actually, not very difficult, and that's what the reaction of the students has been. They are actually enjoying the paper. That is what I would say. So when we talk to them for the feedback of what happened today, they really seem to be enjoying. They are very much happy that the paper was easier. So coming back, sentence correction had a couple of questions. Active passive voice had almost 4 questions. Verb, adjectives, and adverb had 4 questions where you had to identify the adverb, adjective in a sentence. So word meaning were around a couple of questions actually. Conversion of sentence to indirect speech. So the focus definitely remains on the grammar part. So if you have your paper in the coming days, do focus, do revise the grammar concepts. That's going to be very, very important. Take in consideration figures of speech, active passive voice. Then the parts of speech becomes very, very important. Adjective, verbs, adverbs, very important topics, because every day we have seen questions coming from these areas. The other paper in the first shift today was accountancy, and students felt that this paper was also easier. Actually, there were almost 15 numericals in the paper, but they were very easy ones, not difficult, did not pose any threat so called to the candidates who appeared for the examination today. Accounting for not for profit, actually, the first unit in your book had 3 questions from liquidity ratio. Accounting for partnership had almost 6 questions. There were 2 case study. One case study was about reconstitution of partnership के बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन के ऊपर था, and the other case study was on accounting for share and debenture capital. So case study जो था वो over subscription, number of shares, issues consideration के ऊपर था. MS Excel जो computerized accounting system है, which is a very important unit. Like yesterday we had almost 7 to 8 questions from that, had 4 questions today from the MS Excel short form. Then match the following were a total of 8 questions. So ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. आज जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम था उसमें थोड़े से कम क्वेश्चन देखने को मिले, बट ओवरऑल the feedback is that the paper has been quite easy for today, which is day 6 of the examination. The examination continues till 6th of June, and people have already got their intimation slip till 2nd of June. So 3rd, 4th, we do not have any papers happening actually. Moving on to the second shift today, we had mathematics. So some students appeared for core mathematics, some appeared for applied mathematics, legal studies were there, sociology as a subject was there. So let's look at core mathematics. Now, between the core mathematics and applied mathematics, we do know that section A is based on the common topics and it is compulsory. That section A, which has 15 questions, is compulsory. So what was the distribution today? People rated the core mathematics rather slightly
on easy to moderate range basically. So matrices had couple of questions, determinants had couple of questions, calculus से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चंस थे, मीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर couple of questions, लीनियर प्रोग्रामिंग और इंटीग्रेशन के ऊपर 3 क्वेश्चंस थे. So that was very uniform and this was also applicable for the applied maths paper. Before I go to the applied maths, let's look at section B1, which is core mathematics. So relations and functions के ऊपर 2 क्वेश्चन, inverse trigo से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए, matrices के couple of questions थे, determinants के 3 questions थे, maximum minima जो application of derivatives का part है, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 3 क्वेश्चंस थे, एक इजी था, 2 इजी थे, इनफैक्ट एक ट्रिकी लगा बच्चों को थोड़ा सा, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चंस भी जो 2 थे उनको बच्चों को काफी ट्रिकी लगा. इसके अलावा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री प्लेन्स के बारे में जो 5 to 6 क्वेश्चंस फ्रॉम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एक्चुअली लीनियर प्रोग्रामिंग के 5 क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी का भी 3 क्वेश्चन था. सो दैट वाज अबाउट कोर मैथमेटिक्स. अगर हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें विच इज सेक्शन B2, देन मॉड्यूलो अरिथमेटिक के 2 क्वेश्चंस थे, एलिगेशंस मिक्सचर, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स आज पूछा गया था, एक क्वेश्चन था फिलिंग ऑफ टैंक के ऊपर, रेसेस एंड गेम्स के ऊपर ML अग्रवाल वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में पूछा गया था, पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैट्रिसेस के 3 क्वेश्चंस थे. इसके अलावा मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वहां से कॉस्ट दिया हुआ था, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था, वो उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था. मैक्सिमम मिनिमा के यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्ट थे बिल्कुल, दैट इज व्हाट द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स आर. वेरिएंस के ऊपर कपल ऑफ क्वेश्चंस थे, मैच द फॉलोइंग तरीके से, इंडेक्स नंबर्स, प्राइस इंडेक्स टाइप क्वेश्चंस पूछे गए. पॉपुलेशन और सैंपल स्टैटिक नहीं था तो 3 क्वेश्चंस वहां पे थे. फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, डेप्रिसिएशन, EMI, इफेक्टिव रेट, बॉन्ड रिलेटेड क्वेश्चंस 3 थे. मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट, ऑप्टिमम वैल्यू पॉइंट, लीनियर प्रोग्रामिंग जो यूनिट है उस पे से 4 क्वेश्चंस थे. तो दैट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैथमेटिक्स पेपर. सो व्हिच मींस जो सेक्शन B2 का सिलेबस है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, मैक्सिमम मिनिमा के ही आज ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, अराउंड 5, अदरवाइज ओवरऑल 2-3 करके सारे यूनिट से क्वेश्चंस पूछे गए थे. So if you are appearing for applied mathematics in the coming days, do focus on revising, do focus on practicing all the chapters, do not leave any actually, so the questions would be there from all the chapters. Though while legal studies, today it was the first day of the examination, people rated it in easy to moderate bracket, not exactly very easy actually. So judiciary, which is the first unit, had 5 questions. husband wife dispute के ऊपर पूछा गया था, cases को chronological order में पूछा गया था. अगर हम टॉपिक्स ऑफ लॉ की बात करें तो वहां से कुछ क्वेश्चंस आए थे. ट्रिब्यूनल 5 से 6 क्वेश्चंस तो ट्रिब्यूनल्स के ही ऊपर पूछ दिए गए थे. 1996 का जो आर्बिट्रेशन का सेक्शन है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस थे आज. सो ऑलमोस्ट 20% ऑफ द पेपर फोकस्ड ऑन द यूनिट ह्यूमन राइट्स. फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर क्वेश्चंस, अनलॉफुल केस, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, अटॉर्नी जनरल, बार काउंसिल एक्ट, ये सारे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स के बारे में पूछा गया. इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में फुल फॉर्म्स पूछे गए थे. लीगल मैक्सिव भी 2 आए थे आज वहां पे, एक केस स्टडी भी दिया गया था. एड वैलोरम के ऊपर क्वेश्चन था, एक्टस नॉन फैसिट्रियम, ये सारे आज पूछे गए थे एक्चुअली. सो लीगल स्टडीज थोड़ा सा बच्चों को मॉडरेटली डिफिकल्ट लगा. Talking about sociology, which was again in the second shift, this paper was definitely rated easy by the students. बच्चों को sociology का paper easy लगा. Structure of Indian society, जो first unit है वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर, वहां पे 4 क्वेश्चंस थे. सोशल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, वहां से कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड करीब 3 क्वेश्चन पूछे गए थे. सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे. द चैलेंजेस ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी रिलेटेड टू स्टेट्स, बेसिकली 3 क्वेश्चंस वर देयर. प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया के ऊपर मैच द फॉलोइंग आया था, सीक्वेंस ऑफ चेंज, सोशल चेंज एंड पॉलिटी, अबाउट सोशलिज्म 3 क्वेश्चन, सोशल चेंज एंड इकोनॉमी के ऊपर 2 क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट, ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर, एरिनाज ऑफ सोशल चेंज की अगर हम बात करें तो वहां से 4 क्वेश्चन थे. सोशल मूवमेंट्स जो है उसके ऊपर ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन थे. कॉलोनियल टाइम्स पूछा गया था. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसके बारे में बात हुई है,
तो काफी सारे क्वेश्चंस जो थे वो सोशल मूवमेंट्स के ऊपर आए थे, एंड आई थिंक स्टूडेंट्स वर वेल प्रिपेयर्ड as part of the syllabus, and that is the reason why they were able to do well in this paper actually. Moving on to the third shifts, chemistry and biology. That's the feedback which we have for today. So आज केमिस्ट्री जो कल लोगों को थोड़ा आसान लग रहा था, आज थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट लगा. कुछ लोगों ने इजी रेट किया, कुछ लोगों ने मॉडरेटली डिफिकल्ट. डिफिकल्ट नहीं बोला, बट मॉडरेट लेवल डिफिकल्टी की बात हुई है. सो सॉलिड स्टेट कपल ऑफ क्वेश्चंस, राउट लॉ के ऊपर 4 क्वेश्चंस थे, 3 4 क्वेश्चन थे. अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर न्यूमेरिकल थे 2 3, हाफ लाइफ के ऊपर केमिकल काइनेटिक्स, हाफ लाइफ के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए थे. फिर सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर एक पूरा केस स्टडी था 5 मार्क्स का. एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाले यूनिट से एक केस स्टडी था, टेस्ट रिलेटेड था, उसके ऊपर भी 5 क्वेश्चंस थे. डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के 5 क्वेश्चंस थे, पी ब्लॉक के 2 क्वेश्चंस थे. सो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के कपल ऑफ क्वेश्चंस थे. तो ओवरऑल यूनिफॉर्म था. 1 2 यूनिट्स जो मैंने कल भी बोला था, जो एल्डिहाइड्स वाला चैप्टर है, एल्डिहाइड और कीटोन्स वाला चैप्टर, और इसके अलावा जो डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर है, इसको थॉरली अच्छे से कर लो. यहाँ अभी तक जो देखा गया क्वेश्चंस थोड़े इन दोनों यूनिट से थोड़े ज्यादा आ रहे हैं. बायोलॉजी का पेपर लोगों को आसान लगा. कल भी हमने ये चीज नोटिस की थी, जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. आज भी करीब करीब 6 7 क्वेश्चंस थे. प्लेसेंटल हार्मोन हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात हुई है. जेनेटिक्स इवोल्यूशन के ऊपर ऑलमोस्ट 5 6 क्वेश्चंस थे. आरएनए, बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी 6 से 7 क्वेश्चंस थे. टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन मेथड्स, इकोलॉजी के ऊपर ऑलमोस्ट 12 to 13 क्वेश्चंस वे देयर. सो केस स्टडी भी था, हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इंटरैक्शन, कार्बन साइक्लिंग के ऊपर. ये दोनों केस स्टडी वहां पूछे गए थे. पेंटोसॉक शुगर हो गया, क्रायोप्रिजर्वेशन हो गया, टाइफॉइड कॉज पूछा गया, एम्ब्रायो डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चंस था, सेलेक्टेबल मार्कर, क्रोमोसोमल डिसीज, Hardy-Weinberg principle, decomposition sequence. So these were the prominent areas from the questions were asked today. So this was all about third day of CUET undergraduate 2023. It is not prudent to share all the questions because some students have already given the examination. But yes, we are trying to bring as much information for you guys so that you know which units are important. And please understand, CUT as an examination does not put in principle any particular weightage to any particular unit, and it may be possible, and it is happening, not possible, it is happening, that every day you will come across some units given some additional advantage over the other units. So ऐसा नहीं है कि कल अगर एक पर्टिकुलर यूनिट पे ही बहुत ज्यादा फोकस था, बट यस, अगर हम जानते हैं कि लास्ट 2 दिन में इस यूनिट पे फोकस था, तो उसको डेफिनेटली हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है. एंड बाकी यूनिट्स जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको भी थॉरली रिवाइज करना है अगर मेरा एग्जाम आने वाले दिनों में है तो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर या यूनिट पे फोकस होकर के नहीं चलना है. एट द मैक्स किसी भी चैप्टर से अगर या यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत होंगे तो 7 8 होंगे. तो देयर आर रिमेनिंग 40 42 क्वेश्चंस फ्रॉम अदर यूनिट्स. सो एवरी यूनिट, एवरी चैप्टर मस्ट बी गिवन इंपॉर्टेंस व्हेन यू आर रिवाइजिंग, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर योर CUT एग्जामिनेशन. तो किसी एक जगह फोकस करके नहीं चलो. Most of you would have your exam scheduled between 29th to 2nd of June. That's where most of the students have now started getting their city admission slip. So it may be a possibility that some of you might be appearing for both shifts on a single day. Few of my colleagues are actually appearing for almost 6 papers in a single day. So it might be a possibility. Please keep this in mind. Sitting extended long hours can be tiresome, and please understand it. There are a couple of centers where you do not have even ACs. So my suggestion would be sometimes even practice without keeping your AC turned on. You never know what kind of environment you'll be getting in the examination hall. So that was all for day 6, CUT 2023. Tomorrow we'll come back at the same time, 8 p.m., same platform, same channel. See you then. Till then, goodbye.